BJP MLA who's tweeting asking for the release of Kali Charan, the seer who openly abused Mahatma Gandhi and hailed Nathuram Godse on a public platform. The Raipur police meanwhile arrested this religious leader, Kali Charan Maharaj, for using derogatory words against Mahatma Gandhi. He was arrested from Madhya Pradesh's Khajuraho on Thursday. The FIR against Kali Charan Maharaj was filed in Tikrapara police station in Raipur on a complaint by former mayor of Raipur. Soon after the arrest, Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra has objected to the manner of the arrest. The Home Minister has called this unilateral action and a breach of federal structure and understanding among states. He has directed the Director General of Police to seek clarification from his Chhattisgarh counterpart. Meanwhile, Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has now denied any protocol violation and questioned the Madhya Pradesh Home Minister if he is happy or sad over the seer's arrest. On Sunday, speaking at the Dharam Sansad, Kali Charan alleged that the target of Islam is to capture the nation through politics. He's also said that Mahatma Gandhi has ruined India's prospects and that he salutes Nathuram Godse for killing Gandhi. वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। काली आपत्तिजनक तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं। ये संघी मर्यादा का भी उल्लंघन है। पहले भी बता सकती तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। अब तो कल को कोई भी पुलिस का नाम लेके किसी आश्रम में या किसी के घर में घुसेगा और पकड़ लेगा तो ये एक नई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाएगी। नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। All right, let's take you through an old video that was released by Kali Charan Maharaj himself, where he's seen defending his own words against Mahatma Gandhi. गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? विश्वासघात किया है देश का। Now, the famous Ayodhya verdict paved the way for the long-awaited Ram Temple ahead of the Uttar Pradesh elections. BJP government in Uttar Pradesh is now pushing hard to reclaim the holy city of Mathura. Mathura Vrindavan, as it's called. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday said that like Ayodhya and Varanasi, cities of Mathura and Vrindavan in western Uttar Pradesh will also get a temple, and the works have already begun on that front. Earlier, Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has tweeted that preparations were currently underway for the construction of a grand temple in Mathura days after the Akhil Bharat Hindu Mahasabha, a right-wing group, announced plans to install a Krishna idol at the Shahi Eidgah in Mathura. काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। देखिए, हमारा पॉलिटिकल एजेंडा पूरा प्रदेश है। हम पूरे राज्य की 24 करोड़ जनता के हितों के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धर्मांत मंत्रालय खाली कब्रिस्तान बनाने के लिए नहीं होता है, ये मंदिर और उसके उत्थान के लिए भी होता है। तो धर्मार्थ मंत्रालय हमारा इसी काम के लिए होता है। इन्होंने तो कभी उस मंत्रालय के बारे में, मुझे लगता है हमारी सरकार से पहले कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान की बाउंड्री के सिवा इन्होंने बनाया क्या? देखिए, मुख्यमंत्री डरे हुए मुख्यमंत्री, डरपोक मुख्यमंत्री। अब भय सता रहा है, गद्दी जाने का समय आ गया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई कम हो, उन विषयों से भटक के, किसान मजदूर की बात से भटक के वो धर्म की राजनीति में उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। देखते जाइए, मठ में जाने का समय आ गया है। अब जाएंगे मठ में, इसके अलावा तो इनके पास कोई रास्ता है नहीं। Now, ahead of elections in Uttarakhand, Prime Minister Modi will be in Haldwani to inaugurate 23 developmental projects worth 17,500 crore rupees. This will be Prime Minister's fourth visit to the state in less than 3 months' time. Here's our detailed report.
Prime Minister Narendra Modi is on a mega Vikas mission in Uttarakhand. The Prime Minister will be in Haldwani to lay the foundation stone of 23 projects worth 17,500 crore rupees. These include projects varying from irrigation, roads, housing, health infrastructure to drinking water supply. Apart from these, the Prime Minister will also inaugurate a hydropower facility in Pittorgarh. But the main highlight will be an AIIMS in Haldwani that will cater to the needs of Kumaon region. This will be the second AIIMS in the state, in addition to the one in Rishikesh. After the inaugurations, Prime Minister will also be addressing a rally in the pole-bound state. Ahead of the visit, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Dhami visited Haldwani to take review of the preparations. एम्स की सैटेलाइट सेंटर का भी कल शिलान्यास होने वाला है। लखवाड़ योजना जो हमारी 57 करोड़ की योजना है, उस योजना का भी शिलान्यास होने वाला है। बहुत सारी सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारा पिथौरागढ़ का, अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में हमारे यहाँ विकास का एक मील का पत्थर ही साबित होने वाली है। पीएम साहब ठीक 1 बजे यहाँ पर पहुँच जाएंगे और लगभग 2:30 बजे तक उनका कार्यक्रम रहेगा। This will be Prime Minister Modi's 4th visit to the state in less than 3 months. The BJP is pulling out all stops to ensure it can cash in on all the development projects in the state in the assembly elections next year. With Rahul Singh Dharmwal in Haldwani, Bureau Report, India Today. I'm going to cut across to Akshita, who explains to us the developmental projects Prime Minister Modi is all set to launch in Uttarakhand. And let's tell you about the Prime Minister's big visit to Uttarakhand this time. Again, a number of development projects that he, according to the BJP, will be gifting to the people of Uttarakhand. 23 development projects worth a whopping 17,500 crores will be set up. The foundation stone for this will be laid by the Prime Minister. And if you break that down further, 17 of these projects are worth over 14,100 crore rupees. And also 6 of the development projects that the Prime Minister is inaugurating is worth 3,400 crore rupees. All of these projects, the BJP says, will transform Uttarakhand. Now, the biggest focus is going to be the inauguration of AIIMS in Haldwani. This is the second AIIMS in Uttarakhand. Beyond that, also, the Prime Minister is going to be launching a new medical college in Pittorgarh. So you can see that there is a clear focus on healthcare sector as well. Besides that, a 300 megawatt Lakwar project will also be inaugurated by the Prime Minister today. The construction of 151 bridges in parts of Uttarakhand will be announced by the Prime Minister. So that big development push by the Prime Minister today is something that we'll be tracking very, very closely. Now, with key elections in the states round the corner, Congress MP Rahul Gandhi has now left for a brief visit abroad. In fact, the election rally in Punjab's Moga on January 3rd that Gandhi was supposed to attend has now been cancelled. The Congress called the trip a personal visit without disclosing destination. Congress chief spokesperson Ranjit Singh Surdewala has issued a clarification defending the Congress MP's foreign trip. He said that Rahul Gandhi is on a brief personal visit and that BJP and the media should stop speculating. He's also said that Rahul will be returning on the 5th of January. Now, meanwhile, we're looking at Karnataka's government that's now decided to free temples from its control. In fact, the government has now decided to make Hindu temples independent in the state. Bombay-led government hopes to pass the bill to free Hindu religious institutions in Karnataka before the next budget session. The decision was taken at a BJP executive meeting held in Karnataka's Hubli. Karnataka government hopes to lift rules under which temple managements have to seek permission from the state to utilize their income for the development of the temples. In fact, if passed, the law will also allow temples now in the state to manage their own affairs, development, finances, etc. Why the temples should be controlled single-handedly. So it's a very nice idea and a thought which has been brought in by the Honorable CM here in Karnataka to free all the temples. This is a talk which also happened in Tamil Nadu.
We have to wait and watch, because these were the issues which were discussed with our Chief Minister in Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and we have to wait and watch whether he is going to fulfill these promises which were made during the election. Now, big anti-terror operation in Jammu and Kashmir, big success by the security forces. In multiple ongoing encounters, as many as 6 terrorists were killed. They include 2 Pakistani Jaish terrorists and 4 local ones. In fact, while 3 were killed in Kulgam, the 3 other Jaish terrorists were killed in a separate encounter in Anantnag. 1 security force personnel was also killed. He lost his life in the unfortunate gun battle there, while 3 others were injured. Large amounts of arms and ammunition were also recovered. Kulgam police, along with the army and the CRPF, have launched a joint cordon and search operation in Kulgam. Terrorists fired back when asked to surrender, and forces were forced to retaliate. Search is now still on. Several assault rifles, including AK-47 rifles, have also been recovered. कुलगांव इनकाउंटर में जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है और 2 लोकल टेररिस्ट है। उसके पास से 2 AK-47, 1 M4 राइफल मिला है। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। दूसरा इनकाउंटर जो अनंतनाग में हुआ था, डोरू एरिया में, उसमें इनिशियली फायरिंग में 1 टेररिस्ट मारा गया और आर्मी के 3 जवान और 1 JK पुलिस के जवान जख्मी हो गए। बाद में चारों को BB कैंट लाया गया। रात में एक मार्टीरम को प्राप्त किए आर्मी के जवान, बाकी तीनों स्टेबल हैं, शहीद हुआ है। और इनकाउंटर को रात में कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर फिर शुरू हो गया और उसमें बाकी 2 टेररिस्ट मारे गए। आप देख सकते हो कि ये वो मकान है जिस मकान में ये मिलिटेंट्स छुपे थे। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हो कि इस मकान में इन 3 मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी पूरी तरह से इस इलाके को पहले सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सैनिटाइज करेगी और उसके बाद आपको बता दूं कि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है। तो फिलहाल जो कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आपको मैं फिर से ये मकान दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस मकान में ये मिलिटेंट्स मौजूद है, ये वो मकान है। आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप इस वक्त आज तक और इंडिया टुडे पे देख रहे हो कि यही वो मकान है जिस मकान में 3 मिलिटेंट्स ने पनाह ली थी। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्स को जो ही इंफॉर्मेशन मिली कि ये मकान है, इस मकान में 3 मिलिटेंट्स छुपे थे, उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया है और उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स को मारा गया है और अभी भी कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से लगातार जारी है। इश्तियाक सोफी, वेरीनाग।